Good morning everyone, welcome back to day 2 in our Luxembourg trip. So yesterday we were so tired, so after having dinner we just slept and so सुबह से देख रहा हूँ पहले घर का हालत बहुत ही ख़राब है। खाना तो खा लिए थे हम लोग रात को, बट उसके बाद सारा पैकेट्स बॉक्सेस सब वैसा ही है। मैं थोड़ी देर में आपको रूम का हालत दिखाता हूँ, बहुत ही गंदा है। बट अब थोड़ा इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। आप देखते हैं, देखो खाने का सारा प्लेट्स और सब कुछ यहाँ पे पड़ा है वैसे ही। और ये है हम इसकी हालत पे बहुत ख़राब। 2-3 जगह जाना है, एक फॉरेस्ट है और एक कैसल है। सो दोनों जगह पे बहुत चलना है। अब पता नहीं मतलब कब निकलेंगे, कब बहुत टाइम लगेगा दोनों जगह घूमने में, पर दोनों जगह बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग भी स्टे कनेक्टेड, हम लोग भी आपको दिखाएंगे कि लाइक कैसा है दोनों जगह। मे बी इट इज़ ओवर एक्ट, बट बाद अपने अब लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि लाइक हम लोग शाम को लुक्सेमबर्ग सिटी घूम रहे थे। पूरा सिटी वैसा ही है, कैसल से भरा हुआ और चारों तरफ वॉल्स कैसल्स वही है। पूरा लुक्सेमबर्ग सिटी वैसे ही देखने को मिला। आज शाम को हम लोग सिटी सेंटर जाने का प्लान कर रहे हैं, बट देखते हैं कितने टाइम तक हम लोग वापस आते हैं, उसके बाद ही वो वाला प्लान करेंगे। So we have received our morning breakfast. It has some salad, croissant, juice, fresh fruits, scrambled egg and coffee. We have come to another destination at today's day 2, and the name is Tumpel Waterfall. So let's see what all do we have in this waterfall. I mean, it's basically a trekking route right up there. So as I said you, the name of the place is Tumpel Waterfall, and we are heading towards it. So it's kind of a hilly, uphill, downhill, and you can see the road, you can see the view. This is मेरा फोन, हाँ मेरा फोन मेरे पास। मैं बोले मेरे को क्या पता। Anyway, just cross the bridge. So you already see that it's kind of, you know, a very narrow road. रास्ता बहुत ही छोटा है, नीचे पानी सूख गया है और this is the sightseeing. I mean आजू बाजू में जो है
एंड या नेदरलैंड में ऐसा कोई जगह है नहीं. दिस इज़ लाइक really a new place for us even to explore and it's really amazing. अभी फ़िलहाल 8 डिग्री सेंटीग्रेड भी है. ठंड कम लग रहा है क्योंकि हम लोग अब चल चल के जा रहे हैं. मैंने स्पोर्ट शूज़ भी पहना है ताकि हम लोग ज़्यादा चल सके. और सौरभ पीछे पीछे आ रहा है. इधर ना तो हम लोग बहुत पैदल चलना पड़ता है यार यहाँ पे. ऑफ कोर्स यार, दिस इज अ ट्रैकिंग रूट, तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा. हाउ डू यू थिंक? इट्स सो प्रिटी. चला बंद कर देते वैसे. नहीं यार, बैटरी चाहिए यार, पूरा दिन का बैटरी चाहिए भाई. मैं फ़ोन में ले लूँगी, फ़ोन का बैटरी सेव कर दे. ये फुल व्यू है ना, इसको दिस नीड्स टू बी कैप्चर्ड. ये है हमारे व्लॉगर और वो व्लॉग कर रहे हैं. पार्टी तो नहीं कर रहे हैं बट व्लॉग कर रहे हैं. So we have came to this place. This is on the road to the waterfall. So yeah, we are here for a few minutes. We'll enjoy the place, then we'll leave. Waterfall यहाँ पे नहीं है यार. But this is what they say. So yeah, a little bit of water flowing here and there. I'm sure it has a source somewhere, but everyone is, and people are climbing back. So now we are leaving this spot and हम लोग अब जा रहे हैं to the next spot, which is supposedly the highest peak in Luxembourg, and it's in the another part of the country. So we are gonna go there. This is one more spot in this same place, and it's almost same like the previous ones. And this is बहुत फोटोशूट हो गया. अब हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ पे कार पार्क किया है. now we are going to our next destination named Wiltz Castle and see you there. सो हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा पेट्रोल भी डालना था. यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही सस्ता है. अब अगर देखोगे तो यहाँ पे 1.27 है लुक्समबर्ग में, बट नेदरलैंड में 1.67 है. तो यहाँ पे पेट्रोल भी थोड़ा सा सस्ता है.
तो इसीलिए हम लोग टैंकी तो फुल कर लिए। थोड़ा यहाँ पे कॉफ़ी पिए, कुछ ब्रेड वगैरह, यूरोप में और क्या मिल सकता है, ब्रेड ही तो मिल सकता है, तो ब्रेड खाए और हाँ अब निकल रहे हैं ये के लिए। Friends, so now we have reached Wiltz castle and we are climbing up, and the weather is very nice. It's like approximately, the weather is very nice, it's approximately 9 degrees centigrade, but it's quite sunny and I'm totally loving it. So this is the view. So do you see the bright sun up there? नहीं दिख रहा है वैसे किसी को, वो ब्राइट सन है। But it's really bright because it's now कि वो धीरे धीरे spring time आ रहा है and it is now becoming sunny at times in the day. Most of the part of the day is cloudy. Sometimes just in this time in the afternoon it is sunny and I'm totally loving it. So now we are getting inside the castle. So this is the Wiltz castle and yeah, it's so pretty. Hi. हाँ जा सकते हैं ना, जा क्यों नहीं रहा है? हाँ So now we are going upstairs. सच में लॉक है ऊपर नहीं यार यार लॉक है तो फिर बोलो यार नहीं चढ़ता We are going down. बहुत ऊपर तक आ गया यार। जाना है वहां तक। Evening now, it's 7 p.m. and we are out here at Luxembourg Centrum for an evening walk, and right behind us is the Adolphe Bridge, and it's one of the most famous bridge in Luxembourg. And yeah, we are going to have some ice cream and just take a stroll around the city. Yes. And then see what else we can do. And this place is Monument of Remembrance. And this place right behind our back
This is the point, or the name of the place is Monument of Remembrance. Now we are going to have some ice cream. तो हम लोग को दुकान तो वैसे पता नहीं है, तो we just thought we will look for some shops where we can have some ice cream. And this is the view of the center. And we are still in the search of ice cream parlor. Everything seems to be closed, whatever I can see in the Google map. And right at the center we have McDonald's, we have Burger King, we have Pizza Hut there, and a lot of eating options. We are right here at McDonald's. So all the ice cream parlors were totally closed down. It is already 8 p.m. and we were like craving to have ice cream since yesterday, but just because the shops are closed now and we are already late, we thought to have some McFlurry ice cream from McDonald's. So I have ordered it and I'm waiting for the order to come. So stay tuned, guys, and enjoy. So I've taken my ice cream Mac Sunday, and the streets are completely empty. All the shops have closed down. It's 8 past something, I don't know what it is, but the sun is about to set and this place is so beautiful. The sun is finally setting and it's looking so pretty with all shops closed, but the lights are on, and I couldn't still finish my ice cream. And we are walking on the streets of Luxembourg Centrum. Today is our last day to the trip because tomorrow we are starting back to Netherlands, and the weather forecast says that it's gonna rain or probably it's gonna snow. So we'll start early and we'll try to reach home early. So today is basically, or rather practically, the last day of our trip, and the roads are so silent, still so colorful, and all the shops are opened. Sorry, oops, it's closed. I really wanted to do a little bit of shopping because shops here are basically open, but they close early. They close by 6 o'clock and we started only after 7. So yeah. किए नहीं तो लोग देख रहे थे, मेरे को लग रहा. So we have crossed the road. These are some electric bikes which you can take out for rent and go about the city. And this is the beautiful castle view and the beautiful bridge. And these are the two beautiful ladies. Hi girls. रात को लाइट जलने के बाद ये जगह बहुत ही मस्त लग रहा है. इधर इधर इधर
और यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन. So अब लोग देख रहे हो, you are able to see, right? It's looking so beautiful with the lights on, and it's so pretty. We took a lot of photographs here, and I'm waiting to post them soon in the Instagram. Please do check my Instagram profile. I'll give you the link in the description box below. And do like, comment and share the video if you have liked it, and don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. Ordered dinner from a restaurant named the Himalaya at Luxembourg City. This is mixed vegetable, this is chicken kadai, chapati, roti, and yeah, so we are gonna have dinner. बहुत जोर से नींद आ रहा है and बहुत tired है. And tomorrow we have to wake up early in the morning because we have to travel back to Netherlands, and it's almost 300 kilometer and it will take almost 4 hours, and we have to do our checkout at 11 a.m. So yeah guys, stay connected and we will see you in the next vlog. तब तक के लिए bye bye.